Assalamualaikum, dear students. Welcome back to Chemistry Unit 1 of Class 9th. Let's continue the exercise. Today we are gonna discuss short questions. Uh, Here is a soft reminder that this exercise is based on new syllabus for the session 2025 and 26. Let's start. Question number one is differentiate between science and technology. The definition of science is the systematic process of constructing and organizing knowledge about the universe. It means gathering, studying, and arranging information logically to understand how universe works through observation, experiments, and analysis. Experiment observation, experiment और analysis के through understand करना कि how this universe is working. Okay, and the application technology is the application of that scientific knowledge to the practical uses and daily routine. The purpose of science is to seek to understand the natural world, basically natural world को understand करना. And the purpose of technology is to create by using that knowledge, creation of tools, machines, and systems to improve life. The example of science and chemistry is that chemists study the behavior of materials, chemical reactions, and fundamental principles of matter. And technology provides tools and techniques for discovering and developing new materials. The role of science and chemistry is to help it helps in understanding chemical properties and reaction happening in the universe, while technology enhances the research efficiency and improves product quality. Basically, न्यू मशीन्स टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने रिसर्च की क्वालिटी को रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. Science is basically a theoretical and knowledge based, while technology is practical and application based. Next question is differentiate between geochemistry and astrochemistry. As we have already discussed in the chapter, the branch of chemistry that studies the composition, distribution, and transformation of elements and compounds in the Earth's crust. बेसिकली अर्थ के जो क्रस्ट है उसके जो लेयर्स हैं उनमें मौजूद ऑल एलिमेंट्स की कंपोजिशन, उनके रेशोज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन के कौन सी लेयर में कितना कौन सा कंपोनेंट है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स है, और कैसे एक सिंपल बेसिक एटम से कम्प्लेक्स कंपाउंड जो सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये डिस्कस करते हैं हम जियो केमिस्ट्री में. Astrochemistry is basically the branch of chemistry that studies chemical processes and reactions in astronomical environment. Okay, so in this स्पेस में मौजूद तमाम जो केमिकल प्रोसेस और रिएक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाता है. जियो केमिस्ट्री मेनली फोकसेस ऑन अर्थ, रॉक, मिनरल्स, soils, water, and atmosphere, while astrochemistry focuses on stars, planets, etc. Uh, Geochemistry deals with the chemical interaction within Earth's crust, while astrochemistry deals with chemical reactions occurring in space. And geochemistry is applied to help in understanding the Earth's geological and environmental processes. कि अर्थ की जियोग्राफी में, अर्थ की टोपोग्राफी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या उसके सराउंडिंग में इन्वायरमेंटल जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको स्टडी किया जाता है. वाइल एस्ट्रोकेमिस्ट्री की नॉलेज को यूज़ किया जाता है टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग the chemical evolution of the universe. The chemical evolution of universe means it means studying chemical changes in space, like how stars are formed and how elements are created, to learn how the universe has developed over the passage of time. Next question is, with the help of an example, correlate the use of science, technology, and engineering. As we have discussed earlier, that science, technology, and engineering work together to solve real world problems. Here is an example, designing a water filtration system. Water filtration system, as you know, it, okay,
इम्प्योर वाटर को फिल्टर करके प्योरीफाई करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए प्रोवाइड करना. What science does, as we have discussed, science helps to understand the chemical reactions involved in removing contaminants from water. Science ये बताता है, knowledge देता है कि कैसे हम contaminants को, impure substances को water से remove कर सकते हैं. By using that knowledge, technology develops filtration devices and purification techniques to clean water. ये devices बनाती है. Or engineering further designs and builds large-scale filtration systems to provide clean drinking water to communities. ये वो स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जिनमें उन डिवाइसेस को इंस्टॉल करके वाटर को प्योर किया जाता है. So, as this example shows how science provides knowledge, technology, and technology creates useful application, and engineering implements solutions for real-world problems. Question number 4 is how forensic chemistry helps us. Forensic chemistry helps in solving crimes by analyzing physical evidences. Basically, forensic chemistry एविडेंसेस जो मौके पर मौजूद फिजिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको स्टडी करती है. इट आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस, डिटेक्ट्स ड्रग्स, पॉइजन्स, एक्सप्लोजिव्स एंड गन पाउडर एट क्राइम सीन्स. बेसिकली क्राइम सीन है, कोई क्राइम हो गया, वहाँ पे कौन सा कोई ड्रग दे के किसी को अगर किल किया गया तो उस ड्रग को आइडेंटिफाई करना, कोई पॉइजन दिया गया है या किसी ने लिया है तो उस पॉइजन को आइडेंटिफाई करना, मतलब कॉज ऑफ द डेथ. एक्सप्लोसिव, किस टाइप के एक्सप्लोसिव यूज हुए. गन पाउडर, वो जो बुलेट होती है गन की, उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ गन इज यूज्ड. DNA and trace analysis examine blood, hair and fibers to identify suspects. Basically crime scene पर जितने भी अगर कोई कपड़े का टुकड़ा मिलता है, कोई हेयर पीस मिलते हैं, कोई ब्लड स्टेन्स मिलते हैं, तो उनसे आइडेंटिफाई करना कि DNA ट्रेस करना कि किस किस का DNA यहाँ पे मौजूद है. ऑफ कोर्स वहाँ पे उसका विक्टिम का होगा तो विक्टिम का तो पता होगा कि इसका DNA. उसके अलावा जितने भी पर्सन्स का वहाँ पे होगा उनको सस्पेक्ट बना के इन्वेस्टिगेट करेंगे फर्दर. Forgery detection analyzes inks, papers, and writing patterns to detect fake documents. Signatures are currently used in fraud and forgery cases. Basically जो companies होती हैं, even government या private sector, हर कंपनी का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन की वो इंक इस्तेमाल करते हैं अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे. एक पेपर, प्रिंटिंग पेपर जो होता है वो हर एक अब सेपरेट होता है. और राइटिंग पैटर्न्स, एक फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना है, किस साइज़ का फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करके इन चीज़ों का दे कैन आइडेंटिफाई द फ्रॉड एंड फ्रॉडरी केसेस. So, forensic chemistry plays a key role in criminal investigations and ensures justice through scientific evidences, as we have discussed here. Question number 5 is what are the uses of nuclear chemistry? Nuclear chemistry has various applications in different fields. First field is medicine. Used in cancer treatment, radiotherapy, laser treatment is used to treat the cancer, and medical imaging, X-rays में use किया जाता है. Okay. Energy production powers nuclear reactors to generate electricity. जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अबंडेंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उन रिएक्टर्स को जो पावर प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, एनर्जी देता है. Nuclear chemistry. Then industrial and scientific application helps in detecting leaks in pipelines, sterilizing equipments, and dating archaeological artifacts. Carbon dating जिसको कहते हैं. बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े पाइपलाइंस होते हैं, अगर कहीं पे लीकेज हो रही है तो इजी नहीं होता उनको डिटेक्ट करना. तो थ्रू द टेक्निक्स ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री दे कुड बी डिटेक्टेड एंड देन स्टेरिलाइज इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करना इंडस्ट्रीज में, ताकि उनमें कुछ जर्म्स वगैरह जो भी उनको बिल्कुल किल कर देना, बैक्टीरिया को एक्सेट्रा को. एंड जो खंडरात से पुराने वक्त की चीज़ें निकलती हैं उनको आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है. ओके. उर्दू में नवादरात कहा जाता है. उनकी आइडेंटिफाई करना, उन पे अपने टेक्निक्स यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई करना कि कितने साल पुराने हैं. These applications must make nuclear chemistry essential in healthcare, energy, and research, as we have discussed.
So that's all from you exercise of unit 1. I will be back to you with the exercise of unit 2 soon. Allah Hafiz and good luck.